हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट व्हाई यू शुड टेक द सीयूईटी टेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस सीयूईटी टेस्ट एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एग्जाम। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शंस में लिंक विजिट कर सकते हैं। सीयूईटी और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि इसका नाम हमें बताता है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रीमलाइन अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस एंड बाय टेकिंग दिस वन सिंगल एग्जाम यू बिकम एलिजिबल टू सीक एडमिशन इनटू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्जाम एज वेल एज फॉर मल्टीपल कोर्सेज। दिस एग्जाम comprises three sections. Section 1, which is the language section, Section 2, which is the domain specific section, and Section 3, which is the general ability or aptitude test section. Section 1 में there are further two subdivisions, Section 1A and Section 1B. Section 1A में आपके regional languages जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयाली, तमिल, ये सारे included होते हैं। और सेक्शन 1B में जनरली फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि फ्रेंच, इटालियन, रशियन, जर्मन, ये सारे लैंग्वेजेस इंक्लूडेड होते हैं। नाउ सेक्शन 1 is compulsory because, as you can understand or comprehend, language is the medium through which any course will be delivered to you. So it is of utmost importance that you ace this section. इस सेक्शन में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से कि सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने होते हैं और टाइम लिमिट होती है 45 मिनट्स। इस सेक्शन का सिलेबस कंप्राइजेस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विच इज द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड a certain given text and answer questions based on this paragraph or passage. Then there is the verbal ability section, which tests whether you know the usage of words and how good is your vocabulary. Then there is the para-jumble or rearranging parts of a sentence, जो कि टेस्ट कर रहा होता है आपकी logical abilities को. Then comes section 2 or the domain specific subject, जिसमें कि you again have 50 questions, जिसमें से सिर्फ 40 आंसर करने होते हैं and the time you get is again 45 minutes. अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स किस बेसिस पे चूज करें? आपके 12th क्लास में जो भी आपका स्ट्रीम रहा है और जो भी सब्जेक्ट्स आपने स्टडी किए हैं, those are the subjects you have to opt for in domain specific subject. Let's say for example that you are a commerce student and the subjects you have studied are business studies, accountancy, economics, and applied mathematics. Then these are the subjects that you should opt for. Then comes section 3, which is the general ability or the aptitude test. Now in this section you get 60 questions, out of which you only have to attempt 50 questions, जिसके लिए टाइम मिलता है 60 minutes. And this section comprises quantitative ability, logical ability, GK, and current affairs. Although section 3 is not a compulsory section, but you must write this section as well because many colleges require your score in this section in order to provide admission to professional courses like BMS or Bachelor of Management Studies या फिर BFIA, Bachelor in Finance and Investment Analysis, और Bachelor in Vocational Studies जैसे कि Bachelors in Banking Operation, Bachelor in Retail Management, etc. Scoring. For every correct answer in single answer type multiple choice questions, you get 5 marks, and for every wrong answer, 1 mark is deducted or there is a negative scoring of 1 marks. Score. In order to secure admission to a top-notch college like Gargi, Lady Shri Ram or Shahid Sukhdev, you should secure around 700 marks and you should be well above 650 marks. So that was a short description of the CUET exam, its structure, and its marking scheme. As far as eligibility is concerned, you should either have already passed the 10+2 or equivalent exam, or you should be appearing for the exam in the year in which you are taking the CUET test. As far as age limit is concerned, there is no specific age criteria and different colleges prescribe different age limits. If you have any doubts, please ask your doubts in the comment section and we will be happy to answer. Thank you.